गर्मी बढ़ते स्वास्थ्य से जुड़ल बहुत समस्या सब आबऽ लागैत अछि। एहि समस्या सबके समाधान में फल फूल के नियमित सेवन से बहुत प्रभावकारी अछि आ ओहिसँ अहाँ जे समस्या सब अबैत अछि ताहिसँ बचल जा सकैत अछि। एहिमे एकटा तरबूज सेहो प्रभावकारी भऽ सकैत अछि। ओना बहुत फल छै लेकिन तरबूज एखन यदि कई मिथिलांचल के वा जनकपुर एहि क्षेत्र में अहाँ जतऽ जेबै ततऽ तरबूज भेट सकैत अछि। तरबूज नियमित सेवन करबाक चाही। एहि गर्मीसँ बचऽके लेल, गर्मी में जे स्वास्थ्य समस्या सब अबैत अछि तकरासँ बचऽके लेल तरबूज सेवन उपयुक्त मानल जाइत अछि। तरबूज स्वाद में मीठ, पानिसँ भरपूर वा ई कही जे अत्यधिक पानि भेल आ शरीर के एकदम ताज़ा फ्रेश बनाबऽ वाला ई फल मात्र गर्मी में राहत नहीं दैत अछि अपितु स्वास्थ्यक लेल सेहो बहुत फायदाजनक अछि। तरबूज में करीब 90% धरि पानि होइत अछि जे गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाबऽ में बहुत सहयोग करैत अछि। दिन भरि गर्मी वा दौड़ दौड़ा के क्रम में, भागदौड़ या दौड़ के क्रम में शरीर के ठंडक मिलै ताहि में तरबूजक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होइत अछि। तरबूज में फाइबर अत्यधिक होइत अछि जे पाचन तंत्र के बहुत मजबूत करैत अछि आ कब्जियत के समस्या में सेहो राहत दैत अछि। पेट के साफ रखैत अछि आ भारी भोजन के सेहो ई पचाबऽ में सहयोग करैत अछि। एहिमे वजन कम करऽ में सेहो ई बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि। एहिमे कैलोरी के मात्रा कम होइत अछि मुदा फाइबर के उपस्थिति के कारण पेट के लंबा समय धरि भरल राखि सकैत अछि जाहि कारण बेर बेर खाय के इच्छा नहीं होइत अछि। तरबूज खेलासँ एहिमे विटामिन ए आ सी तत्व रहै छै जे खास कऽ फ्रेशनेस, निखारऽ वा केश के मजबूत बनाबऽ में सहयोग करैत अछि। नियमित रूप से तरबूज खेलासँ शरीर में नमी बनल रहैत अछि जे चेहरा पर प्राकृतिक चमक आनि सकैत अछि। आँखिक लेल सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि। कोलेस्ट्रॉलक हिसाब से यदि बात कयल जाय तो पोटासियम आ एंटीऑक्सीडेंट होइत अछि जे रक्तचाप के नियंत्रण राखऽ में सहयोग करैत अछि, हृदय के स्वस्थ बना सकैत अछि आ रक्त में कोलेस्ट्रॉलक स्तर के सेहो संतुलित रखैत अछि। तरबूज के सीधे काटि कऽ सेहो खायल जा सकैत अछि वा ई कही जे फेरसँ एकरा जूस बना कऽ एकरा सलाद में सेहो शामिल कयल जा सकैत अछि।